है तू जो आजकल, क्या सोचता है देश जाएगा बदल, किसी ने दिन दहाड़े लूटा है संभल, देश प्रेम के नाम पर। ये लाइन में खड़ा है तू जो आजकल, क्या सोचता है देश जाएगा बदल, किसी ने दिन दहाड़े लूटा है संभल, देश प्रेम के नाम पर। माफ वो हुए जो साफ कर गए, आम लोग लाइन में ही मर गए, छिन गया गरीब का निवाला है, मोदी मित्रों का ही बोलबाला है, करोड़ लाख मोदी मित्र ने डकार, भले ही मचे देश भर में हाहाकार, मोदी जी के बागों में रहे बहार, देश प्रेम के नाम पर। संवादासाठी या चर्चासत्रासाठी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ञ सन्माननीय प्राध्यापक अरुण कुमार या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या कार्यक्रमाचे आयोजक आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून त्यांचं स्वागत। त्याचप्रमाणे द इकॉनॉमिक टाइम्सचे माजी संपादक सन्माननीय राजऋषी सिंघल या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचंही स्वागत। आणि यानंतर लगेचच या कार्यक्रमाच्या आयोजनामागची आपली भूमिका आपल्यासमोर विशद करतायत आमदार माननीय जितेंद्र आव्हाड। The great economist and teacher Arun Kumar, my friend Rajrishi Singhal, all those present here. Today, Arun sir, I heard Manohar Parrikar speaking, and he came out with a very relevant statement for the current times. He said that cashless Goa is impossible, but cashless India is possible. I don't know from where these contradictions come in. So cashless Meghalaya, cashless Mizoram, cashless Kashmir is okay, but cashless Goa not possible. It has been nearly 50 days after the announcement of demonetization and 61 change of policy decisions, 61 various announcements. According to my knowledge, sir, I am not an economist. I have done my PhD in history. I am a layman. I am a 10th standard pass as far as economics goes. But last 1 month, probably a day and night, I am only thinking of this because I am on the ground. मी जमिनीवर काम करतोय. Slowly, see, they have played their cards quite well. Last 6 months, we have seen surgical strikes and then सैनिक. वो सैनिक जो 12-14 घंटा सीमे पे खड़ा रहता है, आप 10 घंटे लाइन में नहीं खड़े सकते। बस हमारा यहाँ का गरीब उस माहौल में ही फंसा हुआ है। देश प्रेम, देशभक्ति, they are selling their cards too well. And undoubtedly, though I am a politician, let me be very clear that his credibility is far too high. He has managed things so well that people are all into it. And that's why I brought you all here, because the common man or the Aam Aadmi should understand the after effects. On 8th, he said that it is Pakistan, it is terrorism, it is wrong tenders, illegal tenders in the economy, and iske liye hum ye nikalna chahte hain. On 14th, he says it's a surgical strike on black money. And now, no black money, no for Pakistan, no terrorism, nothing. After 14.25 lakh crores back into RBI, where's the black money? That is what we want to know, because you are a master of, not master of black money, but you are the most studied in this country on black money. Where's this black money? As far as my knowledge goes, black money cannot be in cash. Nobody has the guts to keep 20 crore rupees in his house. It's all gone into bullion, all gone into land, all gone into private properties, so on and on and on. Where does the black money come from? और सर दुख इस बात का है, जे वर्षोनवर्ष मंदिराच्या बाहेर उभे होते
जो सालों साल मंदिर के बाहर खड़े रखे थे, 5,000 साल, जो यहां का पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, जिनको आपने पानी के नजदीक नहीं जाने दिया था, आज वही फिर लाइन में खड़ा हो गया बैंकों के बाहर। यहां का कोई भी धन्ना सेठ लाइन में नहीं आया है। कोई अंबानी को तकलीफ नहीं हो रही है, कोई अडानी को तकलीफ नहीं हो रही है। तकलीफ उस आदमी को हो रही है, यहाँ के बैठे हुए लोग नोकरी धंदा करते हैं। मुझे मालूम है की इनका यानी दैनंदिन कार्यक्रमाशी तुमचा काही संबंध नसेल असं मला वाटतं, पण कधी वेळात वेळ काढून जांभळी नाक्यावरच्या नाका कामगारांशी गप्पा मारून या। आधे नाका कामगार तो निघून गेले। आप समझते हो नाका कामगार क्या होता है? एक नाका कामगार नाम की एक सिस्टम है सर, महाराष्ट्र में है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी होगी। इस देश के पूरे हलके में चलता है। कारपेंटर्स, पेंटर्स, कड़िया, जो मजदूरी करके सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, रात को अपना पैसा लेते हैं, जाके अपनी माँ को नहीं तो बीबी को देते हैं, उसको नाका कामगार बोलते हैं। स्किल्ड वर्कर्स बट डेली वेज अर्नर्स, they have lost their jobs. Half of them are migrant. They have gone to their villages. Most of the industries are suffering because of that. अभी सेठ के पास ही पैसा नहीं है तो कामगार उसको कहाँ से देगा? कोणाला देणार तो पैसे? त्याच्याकडेच पैसे नाही आहेत, शेठकडेच पैसे नाही, त्यालाही समजतंय. Now here is a time when nobody is blaming anybody. I don't know, means out of fear psychosis or what, but people are quiet. But a optimistic person like me feels that I was a kid, I was 12 years old when emergency was declared. That is my hope, Raj, that's my hope. I don't know क्या होगा आगे पता नहीं है, लेकिन जब 75 में इमरजेंसी लगी तब पहले साल में हमने पढ़ा था, देखा था कि सबसे बड़ा जो गांधीयन था उस जमाने का सर, वो था विनोबा भावे. Nobody as big as Vinoba Bhave was alive at that point of time. And then he came out with a statement कि ये अनुशासन पर्व है, इसका स्वीकार करो, देश बदल रहा है. And everybody had their drums on, Indira is India, Indira is India, Indira is India. I don't know, from that was the day I really became passionate about politics. That was the turning point of my life. I don't know how I started feeling it, but I said, something is wrong here. They tried to curb, they got censorship on the press, and a lot of things happened around the country. People were put in behind the bars. And who was Indira? I would like to say it very bluntly in front of you. Indira had a great legacy behind her. कोण होती इंदिरा गांधी? प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी ही नेहरूंची मुलगी होती, मोतीलालची नात होती. तिच्या मागे स्वातंत्र्य सैनिकाचं बॅकग्राऊंड होतं. स्वातंत्र्याला फक्त 30 वर्ष झाली होती. स्वातंत्र्याचा लढा पाहिलेली एक पिढी जिवंत होती. आणि 2.5 वर्षानंतर जेव्हा आयबीनी त्याला सांगितलं निवडणुका जाहीर करा, यू आर विनिंग, थम्स डाउन, यू आर आउट 350 seats in Lok Sabha. India was silent. Yesterday when I was talking to Sharad Pawar on the same topic, we both were there. I said, sir, you have experienced it. And he told me that, Jitendra, when we used to address meetings, 2-2 लाखाच्या सभा व्हायच्या. And after the voting, when results started coming in, I still remember at around 3 o'clock, तभी वो रेडियो चलता था, तभी ये सब टीवी भी का ज़माना नहीं था. और तभी रेडियो पे आया कि अभी प्राप्त समाचार अनुसार रायबरेली से राजनारायण ने इंदिरा गांधी को 1,80,000 वोटों से हरा दिया है. दैट वॉज अ शॉक. ज्या देशामध्ये इंदिरा गांधी हरू शकते त्या देशातली जनता कोणाला कधी हरवेल याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. यू कॅनॉट टेक इंडियन्स फॉर ग्रँटेड. अर्थव्यवस्था म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर या देशाची ओळख सह्याद्रीच्या रांगा, सह्याद्री के पहाड़ियों से इस देश को पहचाना हिमालय के पहाड़ियों से इस देश को पहचाना जाता है. हिमालयाच्या रांगा, सह्याद्रीच्या रांगा, आता बँकांच्या रांगांसाठी जगभर आपण प्रसिद्धी मिळवतोय. वॉल स्ट्रीट जर्नल इज टॉकिंग अबाउट इट. द इकॉनॉमिस्ट इज टॉकिंग अबाउट इट. द फोर्ब्स इज टॉकिंग अबाउट इट. एंड लुक एट द ऑडॉसिटी. When Paul Krugman criticizes the government on this economic stature and the mistake done by this government, Piyush Goyal comes and says, who is he?
What does he understand in economy? And just by getting Nobel Prize doesn't mean that he is a great educationist or he understands everything. ये सत्ता का गुरूर है, ये हवा चल बैठी है अभी. लेकिन जो कुछ हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के कितने लोग मारे जाएंगे, मुझे नहीं पता है. ये क्या समझते हैं मुझे नहीं पता है. लेकिन मैं 100% ये बोलता हूँ कि यहाँ का रिक्शा वाला, यहाँ का तरकारी वाला, यहाँ का आम आदमी जो है, जो दिन का 200 रुपया कमाता है सर, वो आज की तारीख में 50 रुपया भी नहीं कमा रहा है. लोगों के खाने के वांदे, रिक्शा में लोग नहीं बैठ रहे. और सर जहां तक मेरा दिल ये कहता है कि सर जिस दिन बैंकिंग व्यवस्था से हमारा दिल उठ जाएगा, वी विल नॉट स्टार्ट बिलीविंग द बैंकिंग सिस्टम. इथल्या चलनावरचा जेव्हा माझा विश्वास उडेल, सर ये देश की इकॉनॉमी डब्बे में चली जाएगी. आज के हालात में मैं सर बताता हूं कि लोग अगर 2000 घबरी में लेके जाते हैं तो पहले के ज़माने में 1600-1700 रुपया मार्केट में फिर से वापस डाल देते थे. They used to purchase some things, play around with that money. But now they are very cautious. They take the money and spend only 500 and 1500 back into the cupboards. The scare is, अरे बाबा कल क्या होगा बोल नहीं सकते. यानी if you take it as a joke, the social media is so widely saying, अरे अभी अभी नहा के आया हूं, जरा बता आरबीआई का कुछ डिसीजन बदला तो नहीं है. You can take it as a joke, but this is the sentiment of this country today. They are not believing RBI, which is autonomous, which has its own judicial power. The whole structure is such that even Parliament cannot involve itself, interfere in the functioning of RBI. But today, where is Urjit Patel? Urjit Patel is not seen announcing anything. The CBDT takes a meeting, Central Board of Direct Taxes, at 5 o'clock, 6 o'clock, and 8 o'clock it is announced. म्हणजे या देशाची अर्थव्यवस्था केवळ एका तासात बदलली जाते. ह्याच्यावर विचार नाही, चर्चा नाही. And I'm telling it from horse's mouth that even Mr. Arun Jaitley was not aware of this. When he went for the cabinet meeting, the great Modi Sahib, he asked everybody to keep their mobiles. He didn't ask. Everybody was told that keep your mobiles out today. You will not come up with the mobiles. The secretary told them there is something important, keep your mobiles out. He went into the cabinet and then said, okay, I'm just coming in 5 minutes. The cabinet was watching the TV, and then suddenly came the decision, 500 and 1000 गायब झालेत. He came to the meeting, and then he passed the cabinet note. Cabinet is known to be in the parliamentary democracy, sir, if I'm not wrong. Parliament is responsible. The cabinet is responsible to the parliament. It cannot be one-man decision. It has to be a cabinet decision, and the cabinet should have approved it before it could have been announced. How can CBDT take a meeting at 5 o'clock, 6 o'clock and tell the PM tells that it's gone? Today you read the newspaper, sir, they are announcing 8 foreign countries are going to supply the RIM, कागज. यानी ये तो ऐसा हो गया कि भाई खाने को बैठे हैं, 8 बज गए, खाने को बैठा है, लेकिन माँ मच्छी और मटन लाने को बाजार में गई है. खाने को सवा गए घर पे. 14 लाख जब आपको नोट छपवाने ही थे तो कागज का इंतजाम नहीं करना था, छपाई का इंतजाम नहीं करवाना था. मजाक लगता है आपको? आपकी सोच को लोगों ने सलाम करना चाहिए, ऐसा अगर लगता है तो हिटलर में, आई विल फिनिश इट इन 5 minutes मोर. हिटलर ने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, यही तो किया था. ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद जब ग्रेट डिप्रेशन सर 1928 में आया, and any dictator doesn't come and take a position as a dictator immediately. In this world, every dictator has come through a democratic system. You grow through the pages of Hitler. He came through a democratic system. He got himself elected. When Hindenburg fell ill in 1933-34, all industrialists went and told him, this country is going into chaos, Hindenburg, hand it over to Hitler. Hitler took the reins. And after that, the democratic Hitler then showed what exactly he is. And in a fascist state of mind, you have to have an enemy. तुम्हाला एक शत्रू दाखवावा लागतो लोकांना झुलवायला. तुम्हाला अर्थव्यवस्था डुबली असं सांगावं लागतं की संपलंय तुमचं, आता तुमच्या खिशात काही नाही आहे,
तुम्हाला वरती आणायचं असेल ना हे सगळं, माझ्यावर विश्वास ठेवा, मी हे करणार, मी. आणि मग ते हेल हिटलर, हेल हिटलर, हेल हिटलर, तुम्ही कुठलाही चित्रपट बघून घ्या. आणि मग तो वेड लावतो सगळ्यांना. तो सांगतो की सोन्याचा धूर येणार आहे आता, आता इथे पक्षी उडणार आहेत, त्या पक्ष्यांना सोन्याचे पंख असणार आहेत, आता तुमच्या शेतात अन्न येणार नाही, पीक येणार नाही, सोनं येणार आहे, आणि ही जादू मीच करू शकतो. माणसाला शेवटी सर्वात वेडं करते तो पैसा. पैसा आणि पोट ह्या दोन पच्या अशा गोष्टी आहेत ज्याला माणूस देवसुद्धा विसरतो. दिस इज वॉट हॅपन्ड इन जर्मनी, अँड दॅट वॉज फ्रॉम 1934 to 1945. द क्रेझी जर्मनी वॉज आफ्टर हिटलर. But yesterday I was just writing a note, small note on history, and I just thought that aggressive violence of the great Hitler, the hated Hitler, and the non-violence aggression of the great Gandhi. Today Gandhi has more followers and Hitler has more haters. This is the fact of this world. And so I don't know what is going to happen in this country. I am a little bit optimistic. I have been like Mamta Banerjee, sir, I am very proud to say this. I am a very राष्ट्रीय स्तर पे मैं छोटा खिलाड़ी हूँ, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ. लेकिन ये जब अनाउंसमेंट हुआ, पहला रिएक्शन आया ममता बनर्जी का, सर, और मुझे अभिमान है सर कि 11:30 बजे मैंने पहला लाइव फेसबुक नोट डाला है. मुझे इमीडिएट लगा कि मेरी माँ अनपढ़ थी सर, गंवार थी, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हमारे व्यवस्था में सर औरतों का एक अहम किरदार रहा है, उनका एक अहम रोल रहा है. सर, पति दारू पी के घर पे आता है, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गरीब घर में जब पति दारू पी के घर में आता है तब उसके खीसे से बचा हुआ पैसा चुरा करके वो माँ डिब्बे में छुपा के रखती है. भले सुबह मार खाती है कि पैसे कुठे गेले, मला नाही माहीत कुठे गेले, 2 झापड़ खा लेती है, लेकिन वो पैसे दबा रख देती है. लेकिन जब वो घर पे संकट आता है तब वो डब्बा इकोनॉमी ही काम में आई है. ये इतिहास भारत नहीं भूल सकता है. आज वो जो मेरी माँ है, उसके घर के जो पैसे, जो बैंकिंग को, मैं खुद की माँ के बारे में बताऊं, उसको बैंकों का कुछ मालूम ही नहीं था, व्यवहार ही नहीं मालूम था. मग त्या माझ्या आईचे पैसे आता ब्लॅक, उसके अगर बैंक में पैसे डालने समझो, उसके पास 3 लाख रुपया है. हा, आता आमच्या मोलकरणी वगैरे असतात, बिचाऱ्यांना 100 रुपये दिले, 200 रुपये दिले, दिवाळीचे पैसे दिले, त्या खर्च नाही करत. घरातल्या अडचणी नजरेसमोर ठेवून दाबून ठेवतात. त्यांच्याकडे 50-60 हजार रुपये असू शकत नाहीत, ते ब्लॅकचे आहेत. मी गाव फिरतो महाराष्ट्रामध्ये सर. प्याज आहे, प्याज और टमाटर सर, कांदा आणि टमाटा सर 50, 30, 25 पैसे किलोने विकलं जात आहे. काय सांगतो शेतकरी की साहेब डिझेललाच पैसा नाही, माल उचलायचा कसा? अच्छा, माल उचलायला साहेब मजूर आहे, मजूरला पैसे द्यायचे कुठनं? ते उचललं, बाजारात गेलो तर अडता येत नाही, कारण का त्याच्याकडे पैसे नाही आहेत. म्हणजे 2-3 महिन्यामध्ये जी अर्थव्यवस्था कोलमडेल ती परत उभी राहायला पुढचं वर्ष 1.5 वर्ष जाईल. ज्या भारताची अर्थव्यवस्था 2008 साली पूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. दुबई हॅड गॉट बँकरप्ट, अमेरिका वॉज आउट, and there India survived because there was an intelligent prime minister called Manmohan Singh. In 4 words, how an intelligent man speaks. In 4 words he summed up: monumental disaster and a legal loot. He did not speak much. Intelligent people like you don't speak much. They only take words and selective words and just throw it up. But we survived that. The question only today remains is, आम्ही ह्या संकटातनं बाहेर येऊ का नाही? एकीकडे ट्रम्प राज्य करतोय, माहीत नाही उद्या अमेरिकेत काय होणार आहे, उद्या ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिट झालेलं आहे, सगळ्या अर्थव्यवस्थेवरती सगळे मार बसतायत, ते फक्त जाती धर्माच्या नावावरती. ट्रम्प तिथे अमेरिका, स्पॅनिश यांच्या विरोधात वातावरण तयार करून निवडून आलेला आहे. तो उद्या काय करेल सांगता येत नाही. ब्रिटनमध्ये काय होईल सांगता येत नाही. ब्रिटनच्या एक्झिटमुळे युरोपवरती काय परिणाम होतील सांगता येत नाही. अशा वेळेस जेव्हा आपल्याला एक संधी होती, चायना जिथे खाली पडत होती, जिथे आपली अर्थव्यवस्था मजबूत होत होती, जिथे जगाच्या पाठीवरती 2030 साली दिस विल बी द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, हिअर वी विल हॅव द यंगेस्ट टेक्निकल म्हणजे पॉप्युलेशन ऑफ द वर्ल्ड, त्या देशाला पुढचं भविष्य काय आहे आज सांगता येत नाही आहे.
हेच खरं धोक्याचं निशाण आहे. जर आम्हाला उद्या कळत नसेल काय होणार आहे, तर आज आम्ही अंधारात चाचपडतो आहोत. उद्याचं आम्हाला स्थैर्यच कळत नाही, उद्या होणार काय. आणि म्हणून मी ह्यांना आणलं आहे. मी हिस्ट्रीमध्ये PhD केले, तुम्हाला खूप लोकांना माहिती नसेल, तुम्हाला वाटत असेल की मी ACCच पास आहे, पण मी शिकलो आहे थोडासा. तर he has done his economics, PhD in economics. And on day one, when I tried to speak to him, I was told by my friend Rajdeep Sardesai that he doesn't go to any political programs. He doesn't share a political stage. So I spoke to him for the first time and then avoided speaking to him because I did not want to reveal my identity. Because after hearing him on NDTV, after hearing him with Rajdeep Sardesai, I was of the opinion that nobody else can speak in a common man's tone. असं आहे की हे सगळे हायफंडा लोक आहेत, त्यांचं इंग्लिश म्हणजे आपल्या बाउन्सरच असतं. पण त्यांनी जे एका वाक्यात सांगितलं की तुम्ही यू हॅव सक्ड आउट 85% ब्लड ऑफ द बॉडी. आता एव्हरी कॉमन मॅन विल अंडरस्टँड दॅट वन्स यू सक आउट 85% ब्लड आउट ऑफ द बॉडी, द वायटल ऑर्गन्स आर आउट टू बी डॅमेज्ड. द लिव्हर इज आउट, द किडनी इज आउट, द हार्ट इज आउट, द ब्रेन इज अफेक्टेड. Then you pump in 85% of the blood from from where you collected. Those organs will not function as they were functioning before. You agree to this? And this theory was brought in by this man, a very common man's theory. की तुम्ही 100% चलन आहे तुमच्याकडे, त्याच्यातलं 85% चलन वो 500 के और 1000 के नोटों में थे, वो आप खींच लेते हैं और कहते हैं कि अब ये देश को हम जिंदा करेंगे. आप इसको जिंदा नहीं रख सकते. आपके आंखों में तो ये जिंदा दिखेगा, लेकिन इसकी मौत कभी की हो चुकी है. अब चाहे कितने भी इंजेक्शन लगाओ, पता नहीं इस देश का क्या होगा. चलो इनके ही मुंह से सुनते हैं आगे भारत का भविष्य क्या है, डिमोनेटाइजेशन के बाद भारत कैसा दिखेगा, क्या होगा इस देश का. जो जितनी उत्सुकता आपको है उतनी ही मुझे है, इसलिए इनको इन दोनों मान्यवरों को यहाँ पे लाया. शुक्रिया सर, आप आए. You have shared a stage with a political person, but by heart I am telling you, I leave my politics when I am in such type of